Dear students and my fellow viewers, I welcome you all. In this lecture, I am going to discuss with you the recombination of colors, and I will throw some light on the dispersion of light, which I have already discussed with you in the previous lecture. Dear students, in the dispersion of light, I make you understand that when a white light is passed through a glass prism, this white light splits. This white light splits, we can say, into its different constant colors. The splitting of this white light into its different constant colors, this is here termed as dispersion of light. And so we can say band of 7 colors so obtained. So here we got the band of 7 colors. Web V for violet, I for indigo, B for blue. Similarly, G for green, O for orange, Y for yellow, and all for the red. This band of 7 colors so obtained, this is termed as light spectrum. Here is the diagram. So this is a white light. So when this white light is passed through this very glass prism, this white light splits here into its constant colors. This splitting of the white light, it is termed here as dispersion of the light, and the band of 7 colors so obtained, this is here termed as light spectrum. Dear students, red color has the maximum wavelength, so it is deviated least, while as the violet color has the minimum wavelength, so it is deviated maximum. Now, dear students, if the spectrum produced is passed through another prism, यानी जो हमें यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम मिलता है लाइट स्पेक्ट्रम, अगर हम इसको दूसरे प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे, देन द कलर्स रिकम्बाइन एंड प्रोड्यूस द ओरिजिनल बीम ऑफ वाइट लाइट. ये जो यहाँ पे ये जो हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं वाइट लाइट के, ये कलर्स फिर कंबाइन हो जाते हैं और हमें फिर से वाइट लाइट मिलती है. तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये डायग्राम है. इस प्रिज्म के थ्रू जब हमने इस वाइट लाइट को पास किया, ये वाइट लाइट स्प्लिट हुई, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हुआ यहाँ पर, तो हमें बैंड ऑफ 7 कलर्स मिला, तो यहाँ पर हमें लाइट स्पेक्ट्रम मिला. अगर हम इस लाइट स्पेक्ट्रम को फिर दूसरे प्रिज्म के थ्रू पास करवाएंगे, तो ये जो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स ये फिर से रिकम्बाइन होके फिर से वाइट लाइट बनाते हैं. दिस फिनोमिनन, डियर स्टूडेंट, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड हियर एज द रिकम्बिनेशन ऑफ कलर्स. इसको हम रिकम्बिनेशन ऑफ कलर्स कहते हैं. लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है that these two glass prisms they should be placed with opposite apices, यानी इसका एपिसिस एक डायरेक्शन में, इसका एपिसिस दूसरी डायरेक्शन में होना चाहिए. ठीक है, ये इसके लिए कंडीशन है. दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी, तो वहाँ पर इसका तजुर्बा किया जा सकता है. सो दिस phenomenon is here termed as recombination of colors. Now you are well aware about the phenomenon of dispersion and the light spectrum and the phenomenon of recombination of colors. Now let's try to understand rainbow. Rainbow is basically associated, it is relevant to this dispersion of light. So here we can say rainbow is the best example in the nature, through which we can understand this dispersion of light. So it's one of the most beautiful examples of spectrum formed due to dispersion of this light in the nature. So rainbow क्या है? Rainbow एक बेहतरीन एग्जाम्पल है डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन द नेचर की. रेनबो आप ऑफन देखते हैं जब भी हल्की फुल्की बारिशें होती हैं, तो उसके बाद जब सनशाइन निकलता है, तो उसी के साथ हमें बैंड ऑफ 7 कलर्स नज़र आता है स्काई में, तो जिसको हम कहते हैं रेनबो. नाउ हाउ दिस रेनबो इज प्रोड्यूस्ड और हाउ दिस इज फॉर्मड. डियर स्टूडेंट्स, दिस रेनबो इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट. तो होता क्या है, दिस रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट by tiny droplets of water suspended in air just after rains. So just after the rains, what happens, tiny droplets of water they remain suspended in the air. So this light passes through these droplets. These suspended water droplets there, so they act as, we can say, the innumerable small prisms. So every droplet जो होता है एयर के अंदर आफ्टर वी कैन कहेंगे रेन्स के बाद, एवरी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दैट इज सस्पेंडेड इन द एयर, ये एक्ट करता है एज ए स्मॉल प्रिज्म. तो हर एक ड्रॉपलेट एक एक प्रिज्म एक्ट करता है, यानी हर एक ड्रॉपलेट को एक एक प्रिज्म बनता है. जब वाइट लाइट पास होती है इनके थ्रू, तो दिस वाइट लाइट गेट्स डिस्पर्सड, ये डिस्पर्स हो जाती है, यानी ये बिखर जाती है, सेपरेट हो जाती है टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, जो जिसको हम फिर बाद में बोलते हैं दिस इज रेनबो. द रेड कलर इज ऑन द अपर साइड, वायरस वायलेट कलर इज ऑन द इनर साइड. सो रेड कलर टॉप पे होगा, तो वायलेट कलर अंदर ही होगा, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ वो कम होती है. सो वी कैन सी इट विद सन ओवर द बैक. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी एक डायग्राम है, अगर आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. सो यहाँ पर हम कहेंगे वाइट लाइट जो हमें सन से आती है, तो these are here we can say this these rain droplets. सो रेन ड्रॉपलेट्स के थ्रू जब ये पास होती है,
तो दिस वाइट लाइट इज़ here split it into a band of 7 colors। तो हमें यहाँ पर अपनी आँख से अगर हम देखेंगे तो रेड जो इस रेनबो का कलर होगा, तो टॉप में क्या आएगा, टॉप में हमें ऑन द अपर साइड हम रेड कलर को, नीचे हम क्या देखेंगे, वायलेट कलर, और बीच में जो डिफरेंट कलर्स जो वेव वेयर के बनते हैं। दिस इज़ हियर द रेनबो। नाउ यू गॉट टू नो अबाउट दिस spectrum of the light, and the combination of colors, and you also understood about this rainbow. So let me once more repeat it, how rainbow is produced. Dear students, rainbow is produced by the dispersion of sunlight by the tiny droplets of water that are suspended in air just after the rains. So every droplet of water, it acts as a small prism. So when white light passes through it, this light gets dispersed, it gets, we can say, split into to form a band of 7 colors, which is here termed as rainbow. And we see the red color on the upper side because of its maximum wavelength, and the violet color on the inner side or the loud side because of its minimum wavelength. Dear students, I hope you got this lecture. Inshallah, I'm going to meet with you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.